हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करेंगे ना क्लास 9th का जूलियस सीजर। तो देखो, सबसे पहले तो जैसे कि ये अलग अलग सीन्स में डिवाइडेड है। तो अब एक्ट 1 जो है उसका सीन 1, सीन 2, सीन 3 एंड एक्ट 2 का सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4 तक है एंड वी हैव टू डू ईच एंड एवरी सीन। बेसिकली इन द एंटायर क्लास 9th जूलियस सीजर सिलेबस वी हैव टू अंडरस्टैंड जूलियस फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द पब्लिक। जूलियस सीजर का क्या क्या रीजंस रहता है, शायद कुछ इनर रीजन जिसकी वजह से कैसे कॉन्स्पिरेसी होता है और कैसे फिर जूलियस सीजर को मारा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ मतलब जैसे कि एक्ट 1 एक्ट 2 इंडिविजुअल पार्ट्स में बांटा गया है और उसी के हिसाब से हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब जब इसके आंसर्स आएंगे एग्जाम में या इसको जब आंसर करना होगा देन यू हैव टू रिमेंबर दैट अगर कोई कोटेशन आया है किसी सीन से तो वो सीन कौन सा था। सो दैट इज द रीजन यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी सीन, डायलॉग, एवरीथिंग इन अ सीक्वेंशियल मैनर कि किसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो आप देखो कि सबसे पहले जो एक्ट 1 सीन 1 है वहाँ पे जो मेन 2 कैरेक्टर्स हैं वो है फ्लेवियस और मेरुलस। और ये दोनों ही जो रोम है वहाँ के ट्रिब्यून्स हैं, यानी कि वो लीगल डिग्निटी वगैरह को मेंटेन करने का काम करते हैं। एंड वी नो दैट दीज 2 मेंस आर मैन इन अथॉरिटी बिकॉज व्हेन दे गो एंड से द रोमन पब्लिक टू जस्ट discard themselves or to stop these kind of celebrations which they are doing on the victory of Julius Caesar, people do follow them. So this shows that they are men in authority, they are not just common like Roman citizens. इसके बाद अब जैसे कि फ्लेवियस है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब वो जाते हैं तो सिटीजन से पूछते हैं उनके जॉब्स के बारे में कि फ्रॉम व्हाट प्रोफेशन दे बिलोंग। तो फ्लेवियस जैसे कि फर्स्ट सिटीजन से पूछता है कि hence you ideal creatures, you are ideal creatures, you are worthless people, why are you roaming in the streets of Rome freely without any work to do even on a working day, and why are you roaming here without any sign of your profession, that means without any instrument or cloth which shows that from which profession do you believe. For example, जैसे कि यहाँ पे जो फर्स्ट सिटीजन है वो बोलता है कि आई एम अ कारपेंटर सर। तो मेरुलस पूछता है इफ यू आर अ कारपेंटर देन वेयर आर योर एप्रन एंड रूल, मीन्स अगर तुम कारपेंटर हो देन तुम्हारे वो जो कपड़े हैं जो तुमको कारपेंटर के प्रोफेशन के लिए सुटेबल बनाते हैं, या वो जो रूल है जो हमेशा कारपेंटर के पास होना चाहिए वो कहाँ है। ठीक है, तो ये जो है मतलब अब देखेंगे कि जैसे कि फर्स्ट सिटीजन वाज वेरी लाइक सिंपली गिव द आंसर दैट सर आई एम अ कारपेंटर, बट उसके बाद जब सेकंड सिटीजन आता है तो वहाँ पे काइंड ऑफ पन का इस्तेमाल होता है एंड सेकंड सिटीजन काफ़ी अच्छे से अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करते हुए जो मेरुलस है उसको आंसर करता है। तो अब जैसे कि मेरुलस सेकंड सिटीजन से पूछते हैं दैट फ्रॉम विच प्रोफेशन आर यू फ्रॉम, एंड द सेकंड सिटीजन सेज दैट सर आई एम अ प्रोफेशन फॉर डूइंग विच आई नीड अ ग्रेट कंसाइंस। तो यहाँ पे एक टर्म यूज होता है कंसाइंस का, तो वो मुझे मेरुलस को उतने अच्छे से समझ में नहीं आता है। देन फिर से यहाँ पे मतलब ऐसे अलग अलग आंसर्स देते हैं, फिर पूछते हैं कि स्ट्रेट लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड में आंसर तो ऐसे घुमा के मत दो। एंड देन ही सेज दैट सर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइन वर्कमैन आई एम बट अ कॉबलर। तो यहाँ पे जो कॉबलर है दैट इज अ वर्ड एंड हियर पन इज यूज बिकॉज कॉबलर इन दिस सेंस कैन मीन टू थिंग। कॉबलर ऑल्सो मीन्स अ क्लमजी पर्सन एंड कॉबलर ऑल्सो मीन्स समवन हु ट्रीट्स द शूज एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे जो मेरुलस है इसको उस कॉन्टेक्स्ट में ही लेते हैं कि कॉबलर मतलब एक क्लमजी पर्सन, तो वो अपना प्रोफेशन ना बता के अपने कैरेक्टर के बारे में बता रहा है। सो दिस इज समथिंग विच मेरुलस कैन नॉट अंडरस्टैंड एट द फर्स्ट इंस्टेंस। बट फिर और कुछ बातचीत होने के बाद जैसे कि जब यहाँ पे सेकंड सिटीजन बोलता है दैट सर आई एम अ मेंटर ऑफ बैड सोल्स, ठीक है, प्लीज डू नॉट गेट एंग्री विथ मी सर, आई एम अ मेंटर ऑफ बैड सोल्स। तो यहाँ पे सोल्स का मतलब एक सोल जो हर एक इंसान के अंदर होता है एंड दूसरा सोल जो कि शूज का सोल होता है। तो मेरुलस यहाँ पे वो समझता है दैट ये जो सेकंड सिटीजन है इज टॉकिंग अबाउट टू मेंड ही सोल विच इज नॉट गुड बिकॉज ही इज आर्ग्यूइंग विद द सेकंड सिटीजन। बट हियर फ्लेवियस अंडरस्टैंड दैट अच्छा यू आर अ कॉबलर। फाइनली फ्लेवियस अंडरस्टैंड एंड सेज दिस टू मेरुलस। इसके बाद जब यहाँ पे ये सब हो जाता है कि सर आई एम दैट आई लीव बाय दिस विद द ऑल, तो यहाँ पे जो ऑल वर्ड है जो सेकंड पेज में इस्तेमाल किया गया है दैट आई मेडल विद नो कंट्री मेंस और नो ट्रेड मेंस मैटर नॉर वुमेन्स मैटर्स बट विद ऑल। तो यहाँ पे ऑल मतलब ऑल लाइक ऑल द पीपल, बट एक और ऑल का मतलब होता है दैट इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू ट्रीट द शूज, काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज बाय द कॉबलर्स। तो यहाँ पे मेरुलस हमेशा उसको गलत पर्सपेक्टिव से समझता है और जो सेकंड सिटीजन है वो चाहता भी है कि मेरुलस उसी पर्सपेक्टिव से समझे, बिकॉज एक तो मेरुलस बोल रहे हैं उन लोगों को कि ये जो सेलिब्रेशन है इसको खत्म करो, और दूसरा कि मेरुलस इज नॉट ट्रीटिंग द सेकंड सिटीजन वेरी प्रॉपरली एंड ही हैज ऑल्सो सेड हिम नेव एंड वर्थलेस पीपल। तो इसी वजह से वो उनको आंसर भी देना चाहते हैं। तो सेकंड सिटीजन मेरुलस इस कॉन्टेक्स्ट में भी बोलते हैं कि भले हम डायरेक्टली इनको ना बोल पाए बिकॉज दीज आर मेन इन अथॉरिटी, बट एटलीस्ट इनडायरेक्टली तो बोल ही सकते हैं।
इसके बाद मेरुलस अपना स्पीच देते हैं दैट वेयर फॉर रिजॉइस व्हाट कॉन्क्वेस्ट ब्रिंग्स ही होम व्हाट ट्रिब्यूटरीज फॉलो हिम टू रोम टू ग्रेस इन कैप्टिव बॉन्ड्स वगैरह वगैरह जो भी बोलते हैं कि व्हाई आर यू सेलिब्रेटिंग, व्हाट इज द फैक्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस सीजर्स विक्ट्री, यू fickle minded people, you have also celebrated similarly when Pompey's son and when Pompey has won several wars, and this time when Julius Caesar is in power you are doing the same thing with Julius Caesar. So that kind of fickle mindedness you are, that you can't stick to one particular position. Have you all forgotten how you all have climbed up the towers and chimney tops and everything, and then you used to wait for just having a look at Pompey's chariot passing the street, and here you are rejoicing at the victory of Caesar, who is neither bringing any kind of money from where he has from the place he has like conquered, because this was a civil strife between Julius Caesar and Pompey. So in this, among the same state, two people were fighting for the throne. So there was nothing conquest or money or any kind of workers brought from any other city to any other country, from any other country to this country, from any other country to this country, that people should rejoice that they have won something, because they have won nothing in this entire war. And these people are very frightened, Marullus and Flavius, because they kind of think that their position might come in danger after Julius Caesar has come, because they were men in authority when Pompey was there as a ruler, and they fried that Julius Caesar might also be very ambitious, ठीक है, and they were also quite jealous with Julius Caesar. तो ये सारा कुछ चलता है मेरुलस का स्पीच. उसके बाद फ्लेवियस बोलते हैं कि go good countrymen, assemble all sort of worthless people, like all sort of poor men of you, and then go to the Tiber river, and then cry till the lowest stream touches the most exalted shores of all. So just go and cry to just extend the kind of plague, that is extend the kind of punishment you will get to disrespect Pompey in such a way. And इसके बाद पता चलता है that Flavius is a man who is in more authority even than Marullus, or who kind of dominates more, because जब Marullus बोलते हैं that should we plug out all the decorations from Caesar's statue, as this is the feast of Lupercal, and in that festivity on that year Julius Caesar was the president of the festivities. So should we go and should we tear, or should we just remove all the kind of decorations from Caesar? Marullus asked this in fears that if anybody sees they may punish. And this also happens at later in the scene. We see that Casca informs Cassius and Brutus that Flavius and Marullus have been put to death because of this particular reason of disrobing images and decorations from Caesar's statue. ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेवियस बोलते हैं कि वी शुड, बिकॉज he compares, he use metaphor and compares Caesar with a falcon bird who, if let to arise too much high, he will just soar upon the common people, and he will dominate, and he will show his ambitious over everyone, which is something not good for the common citizen. So we as the tribunes should protect the dignity of our country, and that is the reason if Julius Caesar will come and see all these kind of decorations, it will add to the kind of ambition which he already had. ठीक है, मतलब उसके अंदर फिर पहले से ही ambitions था. अब अगर वो ये सारे decorations देखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे रोमन सिटीजन्स खुश है उसके विक्ट्री पे, तो वो और ज़्यादा ambitious हो जाएगा, और शायद वो ये भी सोचे कि अगर हम डेमोक्रेसी में हैं और तब सेमी डेमोक्रेसी में है और तब लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर हम मोनार्की में भी आएंगे तब भी लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड ही विल ट्राई टू soar up. So disrobing all these kind of images and decorations will do the same thing as removing the wings from a falcon bird. ठीक है. सेकेंड सीन जो होता है जहाँ पे जूलियस सीजर का एंट्री होता है इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन, स्पेशली उस पॉइंट पे जब कैस्का मतलब लाइक केशियस एंड ब्रूटस बात कर रहे होते हैं. ठीक है, तो इस सीन में 3 प्राइमरी सीन्स होते हैं. एक स्टार्टिंग में एंट्री का जहाँ पे पता चलता है कि जूलियस सीजर काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशियस है और काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है. सुपरस्टिशियस इसीलिए बिकॉज ही बिलीव्स इन द सुपरस्टिशन फॉलोड बाय मेनी पीपल एंड इवन देयर एंसेस्टर्स, विच वाज दैट इफ एनी मैन हु इज रनिंग द होली रेस इन द फीस्ट ऑफ ल्यूपर्कल इफ टचेस एनी फीमेल who is a baron, she will be cured of her infertility. And this is when Caesar says Mark Antony, who will run the holy race, to touch Calpurnia, who is Caesar's wife, and she is barren, so that she could be cured of her infertility. Secondly, he is arrogant. Why? Because when the soothsayer in this particular scene tries to warn Caesar against the kind of threat which he may face during on the 15th of March, he just ignores ideas of March. He just ignores soothsayer, saying that he is a dreamer. So he even insults the soothsayer. So basically यहाँ पे पता चलता है that he is very arrogant. इसके बाद they go for the festivities, and यहाँ पे सिर्फ Caesar और Brutus मतलब केशियस और ब्रूटस रह जाते हैं. तो अब जो है अब स्टार्ट होता है केशियस
केशियस का मैनिपुलेशन ओवर ब्रूटस। और ये सीन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो केशियस है वो ऑलमोस्ट अपना 3/4 पार्ट मैनिपुलेशन का कंप्लीट कर लेता है ओवर ब्रूटस, क्योंकि उसको पता है कि ब्रूटस हैज क्रेडिबिलिटी इन हिम बिकॉज पीपल, द रोमन पीपल सीज हिम टू बी अ वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन। एंड इवन बाद में एक लाइन आएगा जो कि शायद कास्का बोलेगा दैट ही विल एक्ट जस्ट लाइक अ richest alchemy who will just turn the negative kind of intentions of us in this entire kind of conspiracy as pure as gold, and the Roman citizen will not protest or say anything against this because Brutus will be a part, so everybody will think that obviously this entire conspiracy is something which is for the good of Roman citizen. And even Brutus was somebody who was a pure soul in this entire conspiracy because he was manipulated by Cassius, but he did not have any intention to kill Caesar. मतलब उसके अंदर थोड़ा बहुत इंटेंशन था इनिशियली, बट वो इतना बड़ा स्टेप कभी नहीं लेता अकेले अगर केशियस उसको मैनिपुलेट नहीं करता तो। और ब्रूटस का सोल पर्पस सीजर को मारने का यही था क्योंकि वो सोच रहा था कि सीजर एम्बिशियस हो जाएगा और हो सकता है कि वो डेमोक्रेसी हटा के, ये जो सेमी डेमोक्रेसी हटा के अपना मोनार्की स्टेबलाइज कर लें। इवन जो इस सीन में सीजर को अपना एयर चाहिए था, उससे ये भी पता चलता है कि शायद वो ये चाहता भी था कि यहाँ पे ये जो डेमोक्रेसी है ये हट जाए और उसका बेटा फिर यहाँ पे राज करे एंड दिस वुड कंटिन्यू। तो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग जो ब्रूटस देख रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था, उससे उसको काइंड ऑफ आइडिया लगा एंड इसी वजह से वो सोल पर्पस था कि बस रोमन सिटीजन को जो बैड कंसिक्वेंसेस होंगे उनसे बचाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सीजर जो केशियस है वो मैनिपुलेट करता है ब्रूटस को, सेइंग दैट आई नो द काइंड ऑफ लाइक लुक्स यू हैव प्रिवेल्ड ऑन योर फेस दीज डेज डज नॉट शो दैट यू लव मी एनी मोर एंड you are acting too stubborn to a friend who loves you. तो ब्रूटस बोलते हैं do not be mistaken, I am not ignoring you, I am just conflicting with two different matters in my mind that has led me to become a country or a city which is in a civil war. तो वो अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं, अपने स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, अपने डिलेमा को डिस्क्राइब करते हैं कि वो दो अलग अलग बातों के बीच में खुद उनका माइंड जो है लड़ रहा है, दैट इज बिटवीन द लव फॉर सीजर एंड हिज पेट्रियोटिक फीलिंग्स फॉर हिज कंट्री। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में वो लड़ रहे होते हैं एंड इसीलिए वो ऐसा फेस या ऐसे एक्सप्रेशंस प्रिवेल कर रहे होते हैं, उनका कोई सोल इंटेंशन ऐसा नहीं है। तो फिर यहाँ पे वही सब चलता है दैट सीजर बोलते हैं अच्छा देन आई हैव मच मिस्टेकन यू, देन ही आस्क्ड क्वेश्चन दैट ब्रूटस कैन यू सी योर फेस बाय योर ओन सेल्फ, एंड ब्रूटस सेज दैट नो एनीवन कैन नॉट सी दैट, लाइक इफ ओनली देयर इज अ रिफ्लेक्शन इन द मिरर और इन द वाटर वन कैन सी देयर ओन फेस और रिफ्लेक्शन। तो केशियस बोलते हैं दैट यस एंड इट्स वेरी मच लैमेंटेड इवन बाय द पीपल दैट ब्रूटस और एनीवन कांट सी देयर फेस, एंड सो आई बीइंग अ मिरर विल शो यू योर ट्रू वर्दीनेस एंड आई विल make you aware about the kind of expectations which the Roman citizen have on you, because पता है हम लोग को कि ब्रूटस के जो ancestors थे उन्होंने टार्क्विन को भी हटाया था ट्राइब को, जो कि सिमिलर इंटेंशन से रोम को ऑक्यूपाई करना चाहते। तो यहाँ पे एक स्पीच इंपॉर्टेंट है ब्रूटस का जहाँ पे वो बोलता है दैट what are these all kind of shoutings are for? He fears that if the common citizens are giving the Caesar all the powers of the Rome. तो जब यहाँ पे केशियस पूछता है लाइक उसको कि do you fear that he's getting all those powers, so he says that yes, I love him but I do fear that he should hold the entire power in his whole self, by his own self, because he know the kind of ambitiousness which may come in someone who is at that such kind of a power, and especially Caesar, as Brutus knows Caesar very well. He is kind of suspicious that Caesar may grow ambitious after he is like added with all those kind of power for the Rome and everything. So that is why he says that I fear that Caesar will be getting all those power, and wherefore, like, why are you stopping me here for a very long time? Like, if you have anything to say me which is worthy of listening or which is for the general good, I am here to listen it, and I will put the honor in one eye, and I will put honor and death in my both eye and will look them indifferently. That means I will not distinguish them, and if there is anything that will give us or me honor, I will even face death for that. So if there is anything which is for the general good, then I am ready to even give my life for the good of Rome. तो यहाँ पे पता चलता है कि ब्रूटस का सोल पर्पस जनरल गुड है, ना कि सीजर को हराना, ना कि सीजर को उस गद्दी से हटाना। उसको बस ये लगता है कि सीजर एम्बिशियस हो सकता है जो कि रोमन्स के लिए अच्छा नहीं हो। And Cassius, being very good in manipulation, even says that Brutus, I know that kind of that kind of feeling that you have. Okay, I know that you are a kind of person, and it can be easily seen by your outward favor as well, by your outward appearance as well. But
let me see you that Caesar is a very feeble person, and such a feeble person should not hold the entire palm of Rome alone. Because once when we were like near the Tiber River, and he told me like Tiber River was shifting and it was at high, like storm was going on, and at that point of time Caesar told me to jump into this Tiber River, and so I did. Even without opening his closet, he just dived into that, and so Caesar did. But before they could reach the yonder point, Caesar cried and yelled out that help me Cassius or he will sink. So this kind of shows that Caesar is a person who is by nature very feeble. So that is why यहाँ पे जो केशियस है वो बताना चाह रहा है that इतने वीक इंसान को रोम की जो गद्दी दे दी गई है, this is something not the good of Rome, and that is the reason we should act against this. इसके बाद he gives another example when they were in Spain and there was fit of shivering on Caesar, means he was having fever, and later in the scene we also see that Caesar is having kind of epilepsy, that is a kind of disease where people can get unconscious at any moment. तो वहाँ पे ही like ये बोलते हैं that Spain में when we were in Spain he was having that fit, and I have seen how the color just discolorizes from his face, and like his lips have gone pale, which today commands and the writers write every single thing which comes out of his mouth. So that is the kind of domination which he shows over the Roman public, and at that particular moment of time I have seen him like यहाँ पे लिखा हुआ है that he was crying like a weak girl, crying that 8 Atenius please give me some water. ठीक है, he is very thirsty so he is asking for water. ठीक है, तो ये होता है. फिर दोबारा से जनरल शाउट होता है, एंड देन केशियस फिर से एग्जांपल देता है दैट व्हाई वी शुड बी सो डिसऑनरेबल ग्रेव एंड सीजर विल बी लाइक कॉलोसस, एंड हम लोग दे विल पास थ्रू द फीट्स ऑफ देम. सो व्हाई शुड वी बी सो मच काइंड ऑफ डिसऑनरेबल ग्रेव्स और सो मच discarded people that we, although being more powerful or although being as equal to Caesar, will leave under him, and we will just like him so that he carelessly nods and just go away. Why should we bend our body in front of him who is no more powerful than us? So what should be in that Caesar, and that is not in Brutus. Write them together, sound them, weight them, and they both the names could easily bring spirits. Then why Caesar should be sounded more powerful and he should be given all the powers and not Brutus? So basically he tries to show every single point, like Caesar being a feeble person, comparing Brutus with Caesar's worthiness, and even showing Caesar to be an ambitious person. He tries to manipulate Brutus in all the fields, and he says that ये सारी चीजों के बाद भी क्यों सीजर उस गद्दी पे पहुंचे, एंड क्यों हम लोग इतने वीक इंसान बन के रह जाए, जबकि वो हम लोगों से कोई भी बड़ा इंसान नहीं है, या वो इतना भी वर्दी नहीं है कि वो पूरे रोम को अकेला संभाल ले. क्योंकि ड्यूक्लेलियन फ्लड के बाद ऐसा कभी भी टाइम नहीं आया जब पूरे रोम का जो पावर है वो एक इंसान के पास रह गया. तो अभी क्यों ये सीजर पूरे थ्रोन को अकेले संभालेगा? ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा चीज होता है. एंड इसके बाद फिर जैसे कि नाउ दिस इज ओनली अ वन शॉट रिविजन वीडियो, सो इट्स इम्पॉसिबल टू लाइक एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन, सो आई एम गिविंग यू अ समरी सो दैट यू कैन रिलेट एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट किस डायलॉग के बाद कौन सा डायलॉग आता है. एंड एज आई हैव ऑलरेडी गिवन माई 9th एग्जामिनेशन, सो काइंड ऑफ आई हैव एन आइडिया दैट विच पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट. ऐसे तो देखो कोई भी पार्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट स्टिल जैसे कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है. एक्ट 1 सीन 1 उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आपका पूरा एक्ट 1 एक्ट 2 आ रहा है तो लाइक सीन द एंटायर सिलेबस ऑफ क्लास 9th, क्योंकि 2 ही रेफरेंट टू कॉन्टेक्स्ट आते हैं जूलियस सीजर से, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बाकी एमसीक्यू की पर्सपेक्टिव से सारा सीन इंपॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है, स्पेशली अभी हम लोग देखेंगे वो जो पोर्शिया वाला पोर्शन है इस पूरे सीन में, वो पोर्शिया वाला पोर्शन, ये कैस्का और ब्रूटस के बीच में जो बात होता है, इनकी केशियस और ब्रूटस के बीच में जो बात होता है, ये दीज ऑल पोर्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इवन द एक्ट 1 सीन 2 जहाँ पे सीजर के सुपरस्टिशियस और एरोगेंट होने का पता चलता है. ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है. इसके बाद देखो कि ये सब कुछ होता है. देन यहाँ पे जो सीजर है ही इज लाइक लुकिंग वेरी पेल विद कैल्पर्निया, इवन शी इज लुकिंग वेरी पेल, एंड ऑल दोज पीपल आर वॉकिंग बिहाइंड देम लाइक अ चिल्ड्रन ट्रेन. सो ब्रूटस एंड केशियस कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे हुआ क्या है. सो ये दैट केशियस सेज ब्रूटस दैट जस्ट प्लग कास्का among this crowd and he will in his soft fashion will say us everything what has taken place in the senate, because they have not gone and joined it. तो मतलब not senate, what has happened in the festivities. तो फिर जो कास्का है वो आता है and he briefly describes that what happens, how Caesar being like an actor was a pleasing and displeasing person, and every like the crowd was following him whenever he wanted. They would have just whenever Caesar would say something which would please the people, they would start clapping and all those kind of thing, shouting and all those. And wahi pe when he
unconsciously, like he collapsed due to his epilepsy in between, due to the bad smell, which is mentioned by Casca, which he even say that, I did not dare to open my mouth in fear that that bad smell, that choking smell will choke me. तो इसी वजह से, but that because Caesar is सबसे काफी अलग है. Caesar is not bound to be in that bad air. He suddenly collapsed, and उसके बाद when he came to his consciousness back, he just opened his closet and said everyone that if he has said anything amiss, then anyone from the crowd would come and would kill him. And even Casca says that, if I would not be any member of any work, and if I would also be a member of this crowd, I would have just followed him by word, and if I wouldn't have, I would just preferred going to hell. ठीक है, तो यहाँ पता चलता है कि कास्का भी सीजर के खिलाफ है, एंड इवन कास्का डज नॉट वांट सीजर टू बिकम अ रूलर. ठीक है, तो ये जो पूरा सीन होता है, लाइक एक्ट 1 सीन 2, इस पूरे सीन में ब्रूटस इज सक्सेसफुल इन मैनिपुलेटिंग केशियस इज सक्सेसफुल इन मैनिपुलेटिंग ब्रूटस. और यहाँ पे काफी सारे लोगों के बारे में, काफी सारे पर्सनालिटीज ट्रेट्स भी दिखते हैं, कैरेक्टर्स टेक, जैसे कि केशियस के बारे में, ब्रूटस के बारे में, दैट ब्रूटस काफी ज्यादा सोचता है. ब्रूटस जेलिसी ड्रिवन नहीं है लाइक अदर कॉन्स्पिरेटर्स. ही इज बेसिकली ड्रिवन बाय द जेन्युइन कंसर्न फॉर द रोमन गॉड. कैस्का के बारे में पता चलता है, इवन एंटनी के बारे में पता चलता है दैट एंटनी माइट नॉट बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर बिकॉज ही कैन नॉट ऑब्जर्व केशियस वेरी नाइसली. बट इसी सीन में जब सीजर लौटते हैं लाइक फेस्टिविटीज से, तो ही ऑब्जर्व्स केशियस वेरी वेल एंड ही एक्चुअली सेज व्हाट केशियस इज. तो केशियस इज अ गुड, लाइक सीजर इज अ गुड ऑब्जर्वर, बट एंटनी माइट नॉट बी अ गुड ऑब्जर्वर, बट ही इज अ वेरी गुड प्लॉटर एंड अ वेरी गुड ओरेटर. ठीक है, तो ये सारे कुछ कैरेक्टर स्केचेस हैं जो कि यहाँ पे होता है. अब यहीं पे सिसारो जो बोलते हैं वो कैस्का को समझ में नहीं आता है, सेज दैट इट वाज ग्रीक टू मी. ठीक है, तो ये बेसिक एक ओवरऑल स्केच आई सेड अबाउट एक्ट 1 सीन 2. आई होप अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सारा सीन्स अच्छे से, then you will be able to connect the like points, and you will be able to, even from a single word or line, will try to discover the entire passage. Obviously it's not possible to remember each and every line, but definitely you will get an idea that इसमें ये सारे keywords थे. अगर हम बोले कि ब्रूटस जो अपना इनिशियल जो स्पीच दे रहा था लाइक केशियस को कि वाई ही डू नॉट वांट सीजर टू बी द रूलर, उसमें वो क्या क्या पॉइंट्स बताया. ठीक है, कि ही लव्स हिम बट ही डज नॉट वांट टू बी द रूलर. उसके बाद वो जनरल गुड पे आ गया कि से मी इफ समथिंग इज रिलेटेड टू जनरल गुड और ऑनर, I will look both of them indifferently. तो ये सारे कीवर्ड्स जो है, indifferently, look both of them, honor, death, ये सारे जो कीवर्ड्स है, बस ये सारे भी अगर याद रहेगा then most of the things are okay. ठीक है, अब सीन 3 आता है एक्ट 1 का, जिसमें बेसिकली सिसारो और कास्का. तो यहाँ पे सबसे पहले तो छोटा सा सीन होता है इंपॉर्टेंट, बिकॉज कास्का यहाँ पे कुछ सीन्स के बारे में बताता है जो वो स्ट्रीट्स ऑफ रोम में देखा है. इट माइट बी अबाउट द कॉमन स्लेव जिसके हाथ में 20 टॉर्चेस जितना ब्राइट लाइट जल रहा था, एंड ही वाज unaffected of all those kind of heat which was in his hand. तो ये वो देखा. इसके बाद thousands, hundreds of ghastly looking women walking who assures that they have seen men in fires walking up and down the streets, and also like about the lion which he saw in the capital, and although he was having that kind of sword in his hand, the lion went without annoying Casca. ठीक है, इसके बाद जो owl who was hooting and shrieking in the streets of Rome. So every single thing, ये जो सारा जो keywords है जो यहाँ पे कैस्का डिस्क्राइब करता है सिसारो को, और जो इनिशियल जो वेदर के बारे में जो डिस्क्रिप्शन देता है कैस्का, दैट आई हैव सीन द स्कोल्डिंग विंड्स बट नॉट एनी काइंड ऑफ स्टॉर्म लाइक दिस which itself it's so threatful, itself is so violent. I have seen several storms, but no storms ever in my life I have seen that is so violent and so like this kind of a weather I have never seen. So Cicero is like although he is afraid of that, and even Casca is afraid of that, because आगे जाके जब केशियस बोलता है that this is a very good night for the men who have good hearts or who are fearful or for honest man, तब यहाँ पे केशियस says that Casca says that why are you challenging the heaven? It is the duty of men to fear when such kind of signs or omens are presented by the heavens to the earth. तो यहाँ पे केशियस बोलते हैं that people who know that the earth is full of faults would definitely knowing since before only that ऐसा कुछ होगा. ये और हर बार जब दुनिया में इतना फॉल्ट भर जाता है, इतना गलतियां भर जाता है, तब यही वेदर कंडीशंस हर बार प्रिवेल करती है. So the men who have honest heart and who have not done anything such kind of thing, they for them this night is very nice. ठीक है, तो
ये सारे इनिशियली जो वो डिस्क्राइब करते हैं, लाइक ऑल्दो आई माइट बी सेइंग द डायलॉग्स हैपोथेटिकली बट यू कैन अरेंज इट, ठीक है। कि यहाँ पे जब ये बात होता है तो कास्ट का लाइक यू नो वाई हु हैव नोन दैट यू नो हेवंस विल मीन इट सो, एंड केशस यहाँ पे ये जो स्पीच है ये देते हैं, एंड देन कास्ट का सेज दैट यू नो इट्स अ ड्यूटी ऑफ मेन टू अफ्रेड, एंड देन केशस सेज दैट यू नो you are dull, either you do not use that kind of sharpness which should be in a Roman, or you do not have it, or you do not use it, ठीक है। you know see me, why all these things, why all these things are happening, why natures are changing, why children are calculating like old men and the old men are acting like fools, why the ghosts and the birds have changed their nature, why all these things in the nature have changed from their original ordinances, like why all these things are happening vice versa or all these kind of things। तो ऐसा क्यों हो रहा है? Just because somebody is either challenging the heaven so much, and he might be a very you know kind of person, so you're a very kind of violent person who is even challenging the heaven or the gods, and अगर तुम मेरी बात मानो, so I can say a name of a person who is just like this monstrous and this violent storm, who is opening graves for them, who is you know just like this, who also thunders and lightens and roars like a lion। तो यहाँ पे कैस्का बोलता है that it's not Caesar, right? It's obviously Caesar, isn't it? तो ये जो केशस बोलते हैं कि let it be whoever he is, and यहाँ पे ये वाला पार्ट अगेन important है कि जब केशस बोलते हैं that the entire Romans are now governed although by the thews, means although by the muscles of the men ancestors, but their spirits are controlled by the womanish spirits, or by the kind of you know womanish sufferance, like the sufferance and yoke which our yoke are facing, the sufferance which our yoke are facing shows us womanish, ठीक है। तो our spirits are governed by the womanish kind of a thing, our women ancestors, and not by the men ancestors, or else Romans would never have seen such kind of situation ever in their life। तो यहाँ पे you know ये बोलते हैं that indeed this is true, but Cassius you know वो बोलते हैं that यहाँ पे कास्का says that you know Caesar is going to be the ruler of many parts except here in Italy। तो केशस बोलते हैं then I know where to put my dagger, and again this part is important because he says that you know I will kill myself, I will free myself from all these kind of bondages, because the spirit cannot be controlled or bonded in any kind of relation, nor the stony walls, nor the you know towers or the iron chains can bound me or can bound the spirit। and if I can do this, I want to you know tell this to every bondman, to every person who want to free themselves from this kind of tyranny। tyranny here means Caesar, ठीक है। तो कैसा बोलता है so I can you know everybody in Rome can do this, and they have this you know audacity to kill themselves or to free themselves from this bondage। Now, and then Cassius says that if this is true, then why we should live under such a man who is no more stronger than us? Why Caesar should start his fire from the awful trash he has considered the Romans to be? Because if any person who wants to start a fire will obviously begin from the trash and you know the kind of straws, and the Roman citizens are acting like the same straws to violate such a fiery thing like Caesar, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है, बट उसके बाद यहाँ पे you know he uses a very good trick of manipulation, saying that I think I am telling all these things in like in front of a willing bondman, and Keska says that no, you know I am a person and I would never disclose all these kind of thing, and you know hold my hand, if anything you are making, any enterprise you are making against this kind of tyranny which we are facing, then I will be the person who will keep his feet to the maximum kind of a place wherever this conspiracy will go। तो यहाँ पे Cassius even is successful in manipulating Casca, ठीक है। अब कास्का भी यहाँ पे आ जाता है, then इसके बाद फिर यही सब वो केशस बोलता है that you know we are half done with all these kind of things because I am already trying to manipulate some honorable minds of Rome, where he means like यहाँ पे उसका मतलब है that he is basically talking about Brutus, that he has already you know half kind of thing, that आधा already वो Brutus को मना चुका है, आधा बाकी है। तो केशियस लाइक ये सब फिर सीन चलता है, एंड देन फिर यहाँ पे केशियस जो है अब उधर से सिन्ना आ रहा होता है, ठीक है। तो सिन्ना को वो तीन काइंड ऑफ लेटर्स काइंड ऑफ दे के वो बोलता है कि गोज एंड पुट वन इज प्लेटर्स चेयर वेयर ब्रूटस कैन फाइंड इट, सेकेंड ऑन दी लाइक थ्रो फ्रॉम द विंडो विच ब्रूटस विल सी इन एक्ट 2 scene 1, एंड थर्ड स्टिक विथ वैक्स ऑन ओल्ड ब्रूटस स्टैचू, ठीक है। तो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग इन डिफरेंट हैंड राइटिंग्स ही हैव रिटन सम काइंड ऑफ यू नो थिंग, kind of letters which will provoke Brutus to be in this enterprise and to actually act against Caesar, ठीक है। तो इस तरीके से भी वो ब्रूटस को मैनिपुलेट कर रहा है इनडायरेक्टली, बता के कि रोमन सिटीजन्स ये चाहते हैं ब्रूटस से, बिकॉज ही नो द वीकनेस इन ब्रूटस, दैट अगर रोमन्स के लिए कुछ अच्छा करने का होगा then ब्रूटस कैन डू एनीथिंग, ठीक है।
तो यहाँ पे फिर सेना चला जाता है एंड देन केशियस एंड कास्का जो है वो पॉम्पीज फोर्ट्स की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पे सारे कॉन्स्पिरेटर्स ब्रूटस का इस्तेमाल कर मतलब ब्रूटस का वेट कर रहे हैं। एंड यहाँ से शुरू होता है एक्ट 2 सीन 1, जहाँ पे बेसिकली सबसे पहले ब्रूटस के बारे में, ब्रूटस का खुद का सॉलिलॉकी बताया जाता है। इसके बाद सारे कॉन्स्पिरेटर्स ब्रूटस के घर पे आते हैं सारा प्लान्स वगैरह का डिस्कशन करने के लिए, जो कि हम लोग सेकंड वीडियो में करेंगे एक्ट 2 के। ठीक है, थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।